वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑप्शंस की बात आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ. एज यूजुअल वी हैव दिनेश सर विद अस. दिनेश सर, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? 20,200 Good, क्रॉस. good morning, Gaurav. Good morning, viewers. Yes, what a bull run and phenomenal, non-stop, एकदम, एकदम पूरा या to the moon है, एकदम. Yes. वो तो ऐसे थर्सडे को थोड़ा थोड़ा डिले हो गया था. लेट में स्पाइक मिला था हमें, कैसे हाँ, बढ़िया it सा. was amazing, Yeah, amazing एकदम. 20,050 and 20,100 mein. So Yeah, yeah, sir. So also viewers, 46,200 which we had discussed on live session with Raj Deepak, जिसका target 320 था. I think yesterday the targets would have been met because Bank Nifty made a high. Because I remember I seeing 305 as the premium of 46,200. So ones who are still holding it or something, you guys can trail it according to your comfort. And rest, so you'll see it on our one click derivatives. Okay, sir, we'll move on with your analysis for yeah, Nifty, Bank Nifty. Before we move on, as usual, last week ka update, and then we yeah. take it. So last week I had said कि 20,000 और 20,400 का मैं ये स्ट्रैंगल ये सॉरी 19,600 20,000 का स्ट्रैंगल करूंगा. बट उसमें मैंने बोला था कि द if I see it sustain above 19,900, I will also add a call long and I will start moving the put ladder up, which worked brilliantly. और because it started only above that 80 19 890 के ऊपर ही सस्टेन करने लग गया था and it worked. वो brilliantly it worked. बैंक निफ्टी ऑल्सो एट सेड कि वो जैसे ही डायरेक्शन मूव देगा इनसाइड द क्लाउड था और मैं उस डायरेक्शन के संग जाऊंगा. देयर इज नो point trying to do a strangle or premeditate a what do you call a spread or something. Go with the direction flow of bank nifty because जब bank nifty चलता है whichever direction it goes berserk एकदम पागल की तरह one side अपना move चालू कर देता है और that's what we did. Non-stop move, brilliant analysis उसमें वो हो गया हमारा. Then came stocks. They are all open. उनमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, which I will talk about them as we progress today with the show. So let me start with Nifty and थोड़ा सा लोगों का जो अभी क्या चल रहा है सबके दिमाग में है पुल बैक आएगा, पुल बैक आएगा, पुल बैक आएगा. Lots and lots of people in social media and a lot of minds, forget social media, most traders के दिमाग में चल रहा है कि इतना बड़ा रैली हो गया पुल बैक नहीं आया, इतना बड़ा रैली हो गया पुल बैक. और अगर आपको याद हो मैंने फर्स्ट जो अपना सितंबर 2 की जो अपनी सैटरडे बात हुई थी और लास्ट सैटरडे भी मैंने बोला था कि पुल बैक खत्म हो गया, शैलो पुल बैक है. अब मूव विल अब नो डोंट थिंक अबाउट मंदी एट ऑल. और वही हुआ है, जस्ट ran non-stop with support from a lot of sectors. Of course, we had a one-off day जिसमें मिड कैप और आपका स्मॉल कैप्स को हिट हुआ था. They've also tried to bounce back, but अभी तक वहां में थोड़ा सा अलार्म बेल. So now, if I just show you in a larger picture where we are. इसको डेली नहीं करता. Yeah, so sir, I'll just हाँ, just before you start with the analysis, because we'll have we have some new audiences as well. So viewers who are new to this episode, we do it every Saturday, and we start from Nifty. We go on to Bank Nifty. These days, Fin Nifty, because Fin Nifty expiry is there. Also, we look at mid because select mid cap index expiry also we have. Then yeah. we look out for the charts that look good for this week, and after that we take the Q&A. So if you have any stocks that you want any chart view on that, you can definitely put it in the comment section, and that is the format of this show. So yeah, sir, you can move on. Yeah. So Nifty देखो जो ये मूव आया है, I have joined a trending line from the 19,000 ये अपना 18,900 19,900 and I have tried to push it up कि कहाँ जाके इसको कुछ ब्लॉक मिल सकता है. यस, इचिमोकू का एक प्राइस थ्योरी टारगेट्स होता है जो हमारा आया है, बट रिमेंबर दिस, the targets are approx, they are not something which जो इचिमोकू ट्रेडर एकदम पिन पॉइंट उधर ही एग्जिट करेंगे या उसके ऊपर. वो प्लस माइनस चलता है और इट गिव्स यू फर्दर पॉसिबिलिटीज अगर उसके ऊपर सस्टेन करने लगता है. इट्स नॉट जस्ट टच एंड गो, इट नीड्स टू स्टार्ट बिकॉज ये जो टारगेट है ये थोड़ा सा बड़ा
व्हाट यू कॉल इन टर्म्स ऑफ वीकली टारगेट्स है ये वाले। तो ये 20,200 एक वीकली टारगेट था जो फ्राइडे को अचीव हुआ है। उसका ये मतलब नहीं है कि चलो इधर ही हम शॉर्ट करना चालू कर दे या हम यहाँ में अनवाइंडिंग कर दे, नहीं, वी नीड टू सी सम काइंड ऑफ पुल बैक हैपनिंग, सम काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग, बिकॉज उसके ऊपर सीधा नेक्स्ट वाला मुझे 2,600 दिखा रहा है। अगेन वीकली है, इट डजंट हैपन सो फास्ट, इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम टू हैपन। सो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का 20,300 पर जाके एक रेजिस्टेंस है। Okay, as the days will pass, supposing it does a lot of consolidation in this particular zone, यहाँ पर, just let me draw and show. Supposing यहाँ में थोड़ा टाइम पास करता है, okay, तो जैसे जैसे डेज बढ़ेंगे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ऊपर जाता रहे, वैसे उस हिसाब से, as long as the trail is not taken out, and it will continue to try to push its way towards this line. इधर में वी माइट, अभी 2 बार यहाँ पर इंस्टेंट रिजेक्शन, ओके, ये तो क्रिएटेड ट्रेंड लाइन है, ये इंस्टेंट रिजेक्शन हुआ है यहाँ पर। इट इज नॉट नेसेसरी कि इंस्टेंट रिजेक्शन आपको हर बार मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट 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 करता है, अटेम्प्ट टू ब्रेकआउट होता है, और नहीं हुआ तो वी गेट अ पुल बैक। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर भी हमें कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है स्क्रीन में, मुझे तो नहीं दिखता एकदम कोई वीकनेस, कोई भी एंगल से कोई वीकनेस नहीं है। शॉर्ट टर्म ओवरबॉट वो सब अलग बात है, बट वीकनेस नहीं दिख रही है। और आई विल कंटिन्यू टू से द थीम, अगर आपको कोई बुलिशनेस नहीं दिखता है स्क्रीन में, आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं समझ में आ रहा है कोई स्टॉक में, तो आप भले उसको लॉन्ग मत करो, इट्स नॉट मैंडेटरी टू गो लॉन्ग। बट इस मार्केट में फिलहाल शैलो रिट्रेसमेंट्स को शॉर्ट करना इज अ वेरी वेरी हाई रिस्क मैटर। इट्स रैदर डोंट ट्रेड, इट्स मोर टू बी विथ द ट्रेंड, ट्रेंड के संग रहिए, ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो अगेन कमिंग बैक, तो दिस इज अ वॉल, 20,300 का वॉल है यहाँ पर इमीडिएट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस वीक, ओके नाउ वन मिनट, जस्ट लेट मी, इसको एक बार आवरली में ले जाता हूँ और समझाता हूँ सेम चीज को वापस। Now we spoke about the resistance. Now let's talk about the support for a second. Now इचिमोकू ट्रेडर के हिसाब से अब देखो तो ये जो हमारा बेस लाइन है, ओके, ये जिन्होंने इधर लिया, चलो इट इज वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल मस्ट हैव एग्जैक्टली बॉट एट द बॉटम, या जिन्होंने डिक्लाइन के तरफ खरीदा था, या जिन्होंने इधर एंट्री लिया, ओके, एज पर इचिमोकू ट्रेडर, उनका अभी तक ट्रेल स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है पोजिशनल वालों का। That trail will only get hit now as the days progress. I'm talking on basis of Friday closing is near 20,100. इस लेवल पर उनका ट्रेल शायद हिट हो जाएगा, बिकॉज ये डायनेमिक ट्रेल होता है सिस्टम का, और तब तक ये चलेगा, तब तक जो इचिमोकू ट्रेडर है वो अपने लॉन्ग्स को संभाल के रखेगा फॉर अ, जितना जितना ऊपर टने उतना बेटर, जितना ऊपर टने उतना बेटर। दे विल नॉट पैनिक, दे विल नॉट फ्लिंच कि अब घूम जाएगा, अब ये हो जाएगा, बिकॉज अभी तक कोई सिग्नल नहीं है उस टाइप का। तो 20,300 ऊपर में और 20,100 इधर है हमारा, राइट, ये हमारा जोन है फॉर। और नेक्स्ट वीक गणपति का हॉलीडे भी है ट्यूसडे को, तो ट्रंकेटेड एक्सपायरी है हमारे सामने, राइट। सो ये दो लेवल मैंने माइंड में रखा है। और क्योंकि स्टॉक मोमेंटम is back in full flow. For some small period of time, it was more of index and large caps. Now we are seeing a lot of low weight large caps also doing well in the market. So based on that, my theory is the trend, if it is within this range also, stock specific chalega, so direction weekly मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा निफ्टी को संभालना। I would be more angled towards my what do you call stock segment. और यहाँ में आप देखो, okay, now look at the interesting factor out here, Gaurav, is that there is some what do you call profit booking which took place, okay, which is normal. इतना steep move आया, यहाँ पर तो clear short covering है, यहाँ पर short covering। ये साइड में देखो आप, इन द मनी राइटर आ गए,
इन द मनी पुट राइटर अगर यहाँ पर है, नाउ दिस इज नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग डे में पुट साइड में ज्यादा राइटिंग होगा, कॉल साइड में 2200 वाला बंदा देखो अभी भी खड़े हैं, वो अभी तक गिव अप नहीं कर रहे हैं, ऊपर में उतना पुट हैवी ड्यूटी राइटिंग नहीं है, फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी था यस, बट अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं है कॉल राइटर का इसमें, तो व्हाट आई एम looking for is just to be alert on my nifty. I'm going to go with a simple strangle of 20,000 put 20,400 call and try to see if it works in my favor. For me, if I get an hourly close above 20,300, remember hourly close above 20,300 by what do you call Wednesday. Okay, by Wednesday, I will exit this. I won't wait for the last what you call 100 points. और similarly ये जो 20,000 का put है by Wednesday, अगर इसमें 20,100 के नीचे hourly closing होने लग जाएगा, I will exit. I will not look for a direction even on a break of both the ranges. नो आई विल जस्ट एग्जिट दैट लेग, और मैं वो दूसरा साइड का जो लेग होगा लैडर का उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, अगर यहाँ अगर अपर ब्रेकआउट हुआ तो इसको ऊपर ले आऊंगा, और अगर डाउनवर्ड ब्रेक हुआ तो इसको नीचे लेके जाऊंगा टू 2300 और समथिंग लाइक दैट. सो आई विल रैदर प्ले अ स्क्वीज देन अ डायरेक्शन इन निफ्टी फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रंकेटेड वीक. एंड प्लस मंडे को दो एक्सपायरी एक साथ है, तो एंड हमने देखा है ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द लास्ट 2 weeks, वो आके लास्ट 2 hours में राइटर्स का हालत खराब कर देते हैं, तो थोड़ा सा वो भी माइंड में रहेगा कि मंडे कुड बी अ ट्यूसडे हॉलीडे, वेडनेसडे कुड बी अ काम डे. We keep those issues in mind when we look at such scenarios in the market. Okay, that's my look on Nifty, Gaurav. I'm going to bank Nifty now. Okay. Yeah. So bank Nifty, again, I've got something very interestingly, I tend to look at things slightly different at times. So I'm going to a weekly time frame. Okay, even though हम weekly options करते हैं, but we should know हमारे what बैंक निफ्टी की एक टेंडेंसी होती है, हिस्ट्री है टू replicate certain moves in a very sharp manner. So first I will for the viewers interest, जो how to spot is, now look at this fall, look at this, okay, this entire thing, look at this, you see flag formations. Now those who are not well versed with charts and all that, जब भी आपको ऐसा कोई लंबा ऐसा कोई डिक्लाइन दिखता है, उसमें आप एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और वेट फॉर द स्विंग हाई टू बी ब्रोकन. यू गेट वेरी शार्प मूव्स, पागल तोड़ मूव देता है उसके बाद बैंक निफ्टी. ओके, यू जस्ट नीड पेशेंस कि जब वो होगा हम तब एंटर करेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करने का उसमें. नाउ दैट्स वन फैक्टर. सी हाउ इट रिपीट्स 1 2 3 4 5 कंटिन्यूस रिपीट करेगा. यू वोंट सी सच काइंड ऑफ रेगुलर रिपीटेशंस इन निफ्टी एट ऑल. ये बैंक निफ्टी की एक खूबी है उसमें. नाउ लुक एट द अदर थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट हियर. See this, every time when it reaches the previous peak, every time, almost every time. Okay, see one, यहां पर एक एक्सेप्शन है, ऊपर निकल गया, right? 2 3, there's a minor pause but है. Okay, so we are back here. 4, so 46,300 is something one should be looking at with a little bit of caution in bank nifty, कि ये कुछ भी कर सकता है उस लेवल पर आके 46,300 पर थोड़ा सा हो सकता है, बट कीप इन माइंड उसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया, ओके, तो ये पागल कर देगा. अगेन इसमें I've drawn the Ichimoku targets, theory targets. Ichimoku theory बोलता है, again, it's not a mandatory कि उस लाइन पर इंस्टेंट रिएक्शन मिलेगा. उसके पास में ही कुछ रिएक्शन होता है, कभी कंसोलिडेट होता है, कभी रिट्रेसमेंट होता है. तो
अगर 46 इसमें 46,640 है, बट ऑलमोस्ट देयर, लाइक आई सेड प्लस माइनस होता है. इफ आई सी इट स्टार्ट pushing its way above 46,300, I have a huge up opening. Again, this is based on weekly, it is not a daily thing. अगर हम सिंपल डेली से भी जाएंगे तो जो निफ्टी में हमने ट्रेंड वॉल देखा और इसका ट्रेंड वॉल देखिए आप, कितना ब्यूटिफुली ये उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है. अगेन आई जस्ट मेक इट इनटू अ हायर टाइम फ्रेम एंड शो यू. See how beautifully Bank Nifty is the most obedient technical study in India. Okay, among Indian stock, कितना beautiful represent करता है. Look at this trend line from 2015. हर बार देखिए, हर बार वहां जाके कुछ ना कुछ करता है. और वो ट्रेंड लाइन हमारा अब फ्रॉम अ ट्रेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ लार्जर पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू किधर है देखो, इधर 48,000 के पास जो सेकेंड इचिमोकू का लेवल सामने से आ रहा है. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ ट्रेंडिंग मूव्स वी आर सीइंग इन अ मार्केट. अगेन आई विल रिपीट, आपको पुल बैक का मार्केट नहीं है ये कि आप पुल बैक भी ट्रेंड करो, दोनों साइड ट्रेंड करने का कोशिश करो. नहीं, ट्राई टू बी विद द साइड ऑफ द ट्रेंड टिल इट डज नॉट बेंड. नाउ अगेन कमिंग बैक टू द आवरली ऑफ बैंक निफ्टी, लाइक आई शोड यू इन द केस ऑफ निफ्टी एज एन इचिमोकू ट्रेडर, अभी तक जिन्होंने अराउंड द टर्न यहाँ इधर यहाँ इस लेवल पर लॉन्ग किया है या कहीं भी उसके अपवर्ड साइड में, ट्रेल अभी तक हिट नहीं है लॉन्ग्स का. ये कंटिन्यूस चल रहा है, अभी कंसोलिडेट करता है निकल जाता है, कंसोलिडेट करता है निकल जाता है. तो जब तक ट्रेल ऑन है तब तक हम इसमें जबरदस्त पकड़े हुए हैं. और अभी उसका जो ट्रेल है वो अराउंड 46,000 है. 46,000 के पास डायनेमिक है, ये चेंज होता रहेगा जैसे प्राइस और डेट से टाइम चेंज होता है. इट डिपेंड्स ऑन बोथ फैक्टर्स, नॉट जस्ट ऑन प्राइस. तो 46,000 के पास मेजर वो सपोर्ट खड़ा है. और जो रेजिस्टेंस है, लाइक आई सेड, 46,300 के पास खड़ा है ऊपर में, 46,300. ये दो लेवल को मैं माइंड में रख रहा हूं. इधर भी बिकॉज इट्स सो क्लोज टू दैट व्हाट वी कॉल range where we tend to see reactions. I am going again with something similar, but before that, let's just talk about the option chain of Bank Nifty. Here we go. See here also, यहाँ पर देखो राइटर का, पुट साइड का राइटर का कॉन्फिडेंस देखो, यहां तक एंट्री पेनिट्रेशन है. Look at that. ये चलिए राउंड फिगर, बैंक निफ्टी हैज अ टेंडेंसी टू सी हायर पार्टिसिपेशन. वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ कॉल साइड में है. These guys are still there, you know, these two. ये देखिए एडिशन है, no doubt about it. But if it starts sustaining above this level, ये हेल क्रिएट कर देगा आपका फॉर द व्हाट यू कॉल द कॉल राइटर. अभी तक उसने कुछ नहीं किया है. But again, you see, there is a large amount of profit taking. And of course, this was Friday's short covering, which we saw on Friday. इसमें यहाँ तक अभी भी बाकी है ये राइटर 46,200 का. तो it's something which I will see from, again, like I said, the market is buzzing more on stocks than on the index from the last 2 days. So here also, going with a simple strangle, 45,700, 46,800. Here, I will again use that same dynamic because truncated है, Tuesday holiday है, सिर्फ 2 दिन है expiry को, तो I'm going with that. Below 46, I will exit this hourly. Above 46,300, I will exit this. Even though 500 point ऊपर है, I will not take a risk. I would, or I will keep both in the call side. In the call side, I will keep the option of, even if I hold this, I will go with a long at the money call immediately. Long at the money call above 46,300, and I will take this ladder up then towards 46,000 वैसे. और उसको मैं रन करने की कोशिश करूंगा because like I said, truncated.
तो और मंडे विल बी अ बिग गेम फॉर ऑल एक्सपायरीज, बड़ा गेम चेंजर है उस दिन, क्योंकि दो दो एक्सपायरी एक दूसरे को वो करने की कोशिश करेंगे उस दिन, राइट. सो ये है. नाउ कमिंग टू सीएनएक्स फाइनेंस, इसमें बहुत इंटरेस्टिंगली एक बेरिश हार्मोनिक बैट बना है, बट द बैट हैज नॉट shown any reversal signal. In fact, ये बैट नेगेट हो सकता है if it does not go below 20,450. I'm going to draw a line here. Yeah. ये जो फ्राइडे का लो था 2447, इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो हमें selling pressure, this bat will get activated. Otherwise, this bat does not get activated. And if this 2450 holds, then the next harmonic pattern in this comes to the alternate bat, which is all the way at 20,800, which will coincide with 46,800 or maybe more of Bank Nifty. Because remember, all the banks are in Fin Nifty. All the banks. और वो जो करेंगे वो इसको साथ में टानेंगे. सीता और गीता जो मैंने इनका टर्म रखा है वो साथ में मूव करेंगे. सो कीप दीज लेवल्स इन माइंड. फॉर 2450 विल मैच विद 46,000 odd of Bank Nifty, or on the upside 46,800 will try to match, or maybe more will match with 20,800 of Fin Nifty. Again, कल expiry है, सॉरी मंडे. डू नॉट एक्सपेक्टिंग उतना भी बड़ा कुछ होगा इसमें, बट जो अगर सस्टेन करेगा इट विल ट्राई टू पुश अप लाइक दैट. एंड इसमें तो फाइनेंस कंपनीज भी है, इंश्योरेंस कंपनीज भी है. सो लार्जर पिक्चर कैन बी वेरी डिफरेंट फॉर दिस फ्रॉम मंडे, राइट. नाउ कमिंग टू मिड कैप निफ्टी. मिड कैप निफ्टी जो मैंने लास्ट वीक वार्निंग दी थी, वीकली बेरिश का रिवर्सल है, बड़ा सा कैंडल है उसका, लॉन्ग वीक कैंडल आप देख सकते हो दोजी, और पुल बैक आया है. नाउ फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन इन मिड कैप निफ्टी इट हैज टू स्टार्ट सस्टेनिंग अबव दैट, नॉट जस्ट हाई 9240. आई वुड पुट इट मोर एट 9275. 25 पॉइंट और दूंगा, 25-30 पॉइंट. उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ये पागल कर दे सबको. मतलब ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन था. ये the sheer tendency of the mid cap select index movement will get more and more stronger. On the other hand, 9,050 के below ये जो लेवल है 9,050, यहां पर एक राइजिंग विंडो है, गैप अप हुआ है. उसके नीचे दिस मूव वाज लेग 1, ये पुल बैक, लोअर हाई, लेग 2 हो जाएगा. टिल 9,050 डू नॉट कॉल दिस अ लोअर हाई. वेट करो उसका ब्रेकडाउन होने का, उसके बाद ही वो अपना कुछ प्रेशर डालेगा. देन वी कैन सी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 8600 ऑड इन दिस. 8600 ऑड तक आ सकता है. 89 तक गया था, 86 तक, तब शायद पुश करेगा. सो दीज फैक्टर्स need to be kept in mind for the 4 indexes in my reading. This is how I will be doing it going forward for the coming week. Now, Gaurav, coming to the past, the pending one, Ramco Cement, beautiful Ichimoku support. One second, sir. I'll just, sorry, I am interrupting. Go ahead. Once we're asking how to calculate Ichimoku targets based on Ichimoku and how to apply Ichimoku. So Dinesh sir has done 2 series with us where he has explained how to he has explained Ichimoku, and it is for free, and one can easily go in the playlist section. Direct Talks is there is a complete playlist on Direct Talks. You can just search Ichimoku. There is the first session and second session where Dinesh sir has explained Ichimoku from basics. He has explained, so anybody who has seen that video can easily apply that knowledge in the charts and easily can trade and do whatever he wants to. That is a completely free educational video from our end. You can definitely have a look there. Okay. Yeah. And also there is harmonics, which is not covered, but we'll request him to cover it next time, or else he usually posts his harmonic studies on his Twitter handle and his YouTube channel. So you can definitely search him on Twitter, Blue Chips, BLUECHIPS
4, that is the number 4 U, but that is Dinesh sir's handle on Twitter. You can easily go search him there, and that's it. So let's move on, sir, with stocks. I just wanted to give this. Yeah, thanks. Yeah. So, Ramco Cement, good pullback, had a solid Ichimoku support baseline. Phenomenal baseline. Future Kumo still bullish. So, pullback seems to be complete. Will try to attempt to go up now. Now, last week, isme, just let's go back, okay, to Ramco Cement. Okay. तो लास्ट सैटरडे इसका जो एक इनिशिएशन हुआ था वो था 900, बैक हियर, या 900 सीई लॉन्ग था, 950 सीई शॉर्ट था, 1 for 1, बट द प्रीमियम देन वाज 25 and 8. अब तो घट गया प्रीमियम, और सिर्फ 2 वीक बाकी है सेटलमेंट में, जिसमें एक हॉलीडे है. सो वी हैव 8 ट्रेडिंग डेज डेफ. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम नॉट गोइंग टू आई एम जस्ट गोइंग टू रिड्यूस माय रिस्क इन दिस. मैक्सिमम रिस्क लास्ट वीक वाज 17. सो नाउ मैं इसको एक और 950 को एक और शॉर्ट कर दूंगा. सो आई विल गेट एन एवरेज शॉर्ट ऑफ around $7 like that. So I will be taking this short a little bit more ahead and make it 1:2. So further trying to reduce my cost in that trade and try to hold it कि चलता है. But there's a caveat in that, और वो मैं अभी इधर फिर से समझाता हूँ. How will I try to manage that thing going forward? So you see this, there is some, इसमें इतना OI नहीं होता है. लास्ट सैटरडे भी मैंने बताया था. यहाँ थोड़ा सा ये देखिए, कॉल वाले राइटर कवर कर रहे हैं. दे आर नॉट ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू दी वो. ऐसे भी लिक्विडिटी कम है, यहां तक हम देख सकते हैं इसमें. और ये आफ्टर 900 एंड बिटवीन 950 सबसे ज्यादा OI ये है. ओके, दिस वन 920 का. तो I am going to do that 1:2 with a caveat that if I see an hourly close above 930, hourly close above 930, because ये मेरा 1 और यहाँ 2 हो जाएगा, मैं एक 940 को प्लस कर दूंगा. तब 940 को एक प्लस करके इसको एक काइंड ऑफ अ बटरफ्लाई बना दूंगा. इवन दो बटरफ्लाई वुड सजेस्ट बाय अ 960 नॉट अ 940, बट आई विल गो विद अ 940. अगेन इट्स अ लिक्विडिटी इशू. लिक्विड स्टॉक होता बहुत, तो मैं 960 या 70 का एक कॉल करके एक बटरफ्लाई बना देता उधर में. बट आई विल डू 940. थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा अपने तरीके से और मैनेज करूंगा. बट अगर आवरली 930 के ऊपर नहीं आता है कोई भी कारण से, so I will just leave it into a 1:2 and reduce my risk and take it forward like that. My downside is capped, my risk is capped in that case. Okay, so this is how I'm going to continue to try to manage Ramco Cement like this. So here, as per Ichimoku bhi agar aap dekho, to the cloud impact is here, okay, 930. So jab tak uske niche hai, the 1:2 is protecting in the move like that, right? So going forward, let's come to Reliance. ABCD reversal tha, harmonic ABCD reversal continues to hold its pattern. बहुत ज्यादा मूव नहीं दिया है इसमें. मैंने 1:1 किया था, 2440 2500 कॉल स्प्रेड, मेक इट एकदम सिंपल, which was at 60 and 32. No change. I am not going to change that at all. उसको 1:2 नहीं करूंगा. Reliance के संग में ज्यादा पंगा नहीं लेता. Reliance is not a stock you mess around with. Again, even though there's a lot of जो ट्रेडर डायलेमा होता है कि सब कुछ चल गया, नहीं चला. मेरे लिए ऐसा है इस समय ये स्टॉक रिलायंस में कि गिरा नहीं ना, और स्प्रेड है. बिकॉज स्प्रेड है, मेरा रिस्क कैप्ड है, तो व्हाई शुड आई गेट दैट एंजाइटी इनटू अ स्टॉक लाइक रिलायंस. मैं उसको जैसा है संभाल लूंगा. यहाँ भी देखो आप, थोड़ा सा OI कम हुआ है. 2440 में भी थोड़ा सा कम हुआ है. यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है. पुट साइड में भी देखो आप, कुछ नहीं, एक्टिविटी नहीं. यहाँ थोड़ा सा है. यहाँ देखो थोड़ा ये वाला थोड़ा सा बेरिश
टाइप लग रहा है, उससे ज्यादा नहीं है, बट ओवरऑल आई विल स्टिक टू 2440, 2500, कोई चेंज नहीं करूंगा इसमें, जैसा है वैसा चलने दो इसको, राइट। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन, टाटा केमिकल। टाटा केमिकल, केमिकल स्टॉक्स में बज आया, बस पूरा बहुत वॉलेटाइल हो गए, इसमें भी थोड़ा सा ऑल्टर कर रहा हूं मैं इसमें। लास्ट सैटरडे, ये तो 2 हफ्ता पुराना है, टाटा केमिकल 1070 का कॉल लॉन्ग था, 1120 का कॉल शॉर्ट था, सिंपल 1:1 स्प्रेड था इसमें। अगेन लेट्स गो बैक टू टाटा केमिकल, इसमें these were the trades, 1 minute, ये और ये था, this was at 75, sorry 35, and this was at 17. Again, risk was capped, but here also I am doing the similar strategy what I have done in Ramco, which is I will be doing a 2x of this. ये 1 and ये 2 हो जाएगा. Let me just write it here. 1, 2, इसको 2 कर दिया. इसमें भी वही कैविएट है, 1090 ये मेरा है 60 मिनट प्लस, 60 मिनट्स इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो आई विल बाय अ, दिस टाइम आई विल गो विद अ 1130, 1130, make it a butterfly, 1 2 1. I will do something like that to protect my trade right to the end इस केस में. Otherwise 1:2, reducing my risk further. First the risk was 18, now I'll bring it down to 10. नहीं हुआ तो मेरा रिस्क मुझे मालूम है कैप्ड है उसमें, उस हिसाब से. Again let's go back to the chart. You can see there is a lot of activity which took place at this level. Here you go, 1090 इसके ऊपर सस्टेन होने लगता है तो आई नो यस पोटेंशियल टू फर्दर पुश विल हैपन. आई नीड एन आवरली क्लोज उसके ऊपर टू फर्दर सी अ सर्ज हैपनिंग इन दैट स्टॉक लाइक दैट. या अच्छा इचिमो को बेसलाइन बाउंस मिला है हमें, सो दैट्स व्हाई नो पैनिक एट ऑल इसमें. नाउ कमिंग टू द स्टॉक व्हिच केम टू माय रेडार दिस वीक, Tata Motors. Tata Motor coming out of a cloud, bounce back, nice rounding shape, nice rounding shape structure formation taking place in it. Future Kumo still not bullish, but mouth is extremely small. Okay, it needs a push of around $8 above 39, that is 45. ये bullish हो जाएगा 45 के ऊपर और अपने सर्ज में निकलेगा. ऑल्सो फ्रॉम अ हार्मोनिक पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ ड्रैगन बिकॉज इट्स मेड अ काइंड ऑफ अ लोअर टाइम फ्रेम डबल बॉटम. यहाँ पर यू कैन सी डबल बॉटम है हार्मोनिक हिसाब से, और हार्मोनिक थ्योरी के हिसाब से इसमें 655 और उसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाएगा तो अराउंड 680-85 तक का पोटेंशियल बनता है. बट I will take it from an option point of view with just 2 weeks to go for the settlement. I will take it first for the first harmonic level of the dragon breakout that we are seeing in it. ये रहा था, ये हुआ था breakout, ये हुआ उसका pullback, और now trying to push its way again above it. So I will look at it from that angle. So here also, because now we have just 2 weeks left for this settlement. एक बार इसका पहले ऑप्शन चेन देख लो and you'll get an idea. यहां देखो आप, look at the covering of 630 call writers and 25. ये क्लियर साइन है कि टाटा मोटर का कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस इवन दो 55,000 है बट 15,000 का डिक्लाइन आया है. मतलब लुक एट द कैंडल, कुछ बहुत बड़ा कैंडल नहीं है बट कॉल राइटर में पैनिक देखो, निकल गए उससे यहाँ पर, और ऊपर में उतना पोटेंशियल राइटिंग नहीं आया, राइट. अंदर थोड़ा सा यहाँ तक कि
620 625 के कॉल राइटर भी अभी भी इसमें 41,000 का हुआ है। ओके, सो अगर ये ऊपर पुश करने का कोशिश करता है, से अबव 635 सस्टेन होता है, तो ये वाले राइटर जब कवर करने आएंगे, ओके, you can see the spike which could happen if that if under those scenarios. पुट राइटिंग अभी तक मिसिंग है, बहुत ज्यादा पुट राइटिंग नहीं है, यहाँ थोड़ा सा पुट राइटिंग है. वी विल, सो वन वे टू व्यूअर्स विल बी हु आर इनटू ऑप्शन चार्ट्स, कीप योर आई ऑन टू थिंग्स. नंबर वन, द 620 कॉल राइटर कवर करने निकलेंगे, बिकॉज अगर ऊपर निकला और समझिए मार्केट फ्लैटिश है, वहां आपको वो एक्टिविटी दिखता है. दूसरा, पुट साइड में अगर आपको ओआई बढ़ते हुए दिख रहा है एट 630, 635, 625, मतलब कॉन्फिडेंस ऑफ द मार्केट, इसमें जो है पुट राइटर की कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, वो उसे और ऊपर पुश करने की कोशिश में लग जाएंगे, कॉल राइटर को पैनिक में डालेंगे. सो keep that factor in mind when you look at the option data. So here, with a 1:2 thing, I am going with the 635 1C at the money and 660 2C. Okay, 2. 1:2 इसको वैसा कर रहा हूं. Again, similar strategy of what I'm doing in Ramco and in Tata Chemical modified. उधर modified है, यहाँ पर इनिशियली है. अगर 645 के ऊपर hourly close होता है, hourly, okay, I need a 60-minute close above it, I will immediately go long in 1,650 CE. Make it a 112, make it a 112 spread, reduce the risk completely at that point, because my harmonic dragon, which is a double bottom structure, बुलिश स्ट्रक्चर होता है वो, तो उस हिसाब से 655 का एक लेवल मुझे दिमाग में रखना है, इसीलिए मैं उसके थोड़ा ऊपर राइटिंग कर रहा हूं और एडजस्ट करूंगा उसको. सो दिस इज हाउ द होल प्लानिंग आई हैव डन, कीपिंग इन माइंड 8 more trading days for this session. Yeah, Gaurav, go ahead. No. सॉरी, कैलकुलेटर सब आ गया था. ओके, आज तो काफी डिस्कशन डेप्थ में हो गया सर, मतलब फ्रॉम ऑल द इंडाइसेस टू 4 stocks. So we, because we need to, even now I'm trying to, for the viewers sake, there are a lot of viewers who are only into option, there are a lot of viewers who only understand charts, so trying to, we let's get together and try to explain to them how the synergy works. बहुत लोगों को दिमाग में रहता है कि जिनको एक चीज का नॉलेज नहीं होता है, उनको लगता है दूसरा काम नहीं करता है या दूसरा, तो जस्ट ट्राइंग टू शो यू सिंक्रोनाइज कैसे होता है. कभी कभी दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, तो एक पहले होगा, दूसरा बाद में ज्वाइन करता है. इट कुड बी चार्ट और ऑप्शन, ऑप्शन और चार्ट, बट जब दोनों सिंक्रोनाइज होते हैं, ट्राई टू कैच इट इन दैट टाइम. One more thing, viewers. This session of Saturday is purely educational. This is not a tip. This is not a buy-sell recommendation. Buy-sell recommendation is given on Thursday live during the expiry session from Mr. Rajdeepak Singh, our derivative head. This is purely educational. If you are taking the position, it is, please consult your financial advisor and then take it, because right now this is just, we feel what the index may do. This is what, these are the stocks that one can keep on radar, not a buy or sell recommendation. So please do not take it that way. I'll take the questions from the Q&A. We have a lot of questions today. We have a lot of questions today, so I'll try to maximize how much ever I can. Okay, viewers who are asking about ONGC option, who are asking about options call given on ICICI's Telegram channel or on ICICI's one-click derivative, please, you have to hold it with the stop loss and the target. Agar stop loss hit nahi hua, if the stop loss is not triggered, that means hold that. That means it is a hold for that position. And if the target or the stop loss is triggered, we will be updating it. So there is no change in the view.
if it is between that range, you have to hold it. That's it. Okay. So I will not take those questions, making it very clear कि जो भी, again I reiterate that if you have taken any options based on one click derivative platform or Telegram channel, you have to hold it with the given stop loss and targets. Okay. Moving on, I'll just take some questions. Bank Nifty 46,200 September monthly. Inamdar sir, that has been, I think the target was done yesterday, if I'm not wrong, for Bank Nifty monthly. I think जब show start हुआ था, I had clearly said that the target is done. I'll still check the prices for. Yes, I think 46,200 is done. We analyze. Okay, just ONGC call have anyway said that you have to hold it with the period of your own. With the stop loss and target. Next is please express your view on. Sorry, sir, we will only take stocks which are listed in FNO, that is options. Your view on PNB options, I am not able to get this question. Reliance Industries, we have covered. Dipesh. Sir, Power Grid, sir, your view on Power Grid and Coal India. Power Grid. We'll take one only, that's either Power Grid or Coal India, because Coal India we covered yes last time. Yeah, okay, so you all have yeah. So Power Grid, okay, let's start here. Right. Completely a strong bullish. See how a stock reacts from an ATH, pull back, trying to push its way above this level. ATH trying to push its way एकदम ऊपर के तरफ. तो I would only say कि ATH stocks को हम इतनी जल्दी वो नहीं करते, bearish नहीं जाते, even though एक single one off candle है. I think ये split candle है ना इसका, या बोनस आया था, उसका रिएक्शन हुआ था, ये adjusted चार्ट है उसका. सो ATH स्टॉक टिल फ्रॉम एन इचिमोकू पर्सपेक्टिव 192 आवरली वुड बी क्रूशियल, बिकॉज हर बार उसको प्रोटेक्ट करते हुए जा रहा है. वो अगर कोई भी एंगल से सस्टेन नहीं करता है आवरली, देन द नेक्स्ट मेजर बेस सपोर्ट इज एट 184. अदरवाइज ATH कंटिन्यू टू परस्यू on the upside. If I draw a simple trend line, here you go. Try to pursue it as much as possible. इसमें trend line support जब तक चल रहा है. Okay. I'll just say, viewers, we have a lot of chats today, so I may not be able to see the earlier chats. So I'll be just taking the latest ones. Also, we have more than 200 people and we have only 36 likes. So if you're there, if you have liked our explanations, okay, let's make it 100 likes, please, if we can. So 70 more likes and we are at 100. So if we can do that, I'll take a few. Chambal fertilizer is a okay. Okay, sir. We'll take Chambal fertilizer. Chambal, has it come out of ban, Gaurav? Any idea? I have no idea, sir. I'll just check. Still, I'll just check. There you go. Seems to be in the ban only. नहीं, I फ्राइडे निकला था शायद. आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे चेक करना पड़ेगा बैन में है कि नहीं. ओके, yeah, see at a particular wall, Ichimoku weekly attempting to get inside this. एक बार इसके अंदर घुस गया ना, ये क्लाउड के अंदर, for Monday next week the cloud is at 280 और उसके ऊपर ही कर रहा है. So you want to see it sustain above 280 और फिर upward move can come all the way till here. काफी strong upward move, provided it sustains above that. Again, ban वाला जो स्टॉक होता है ना, बहुत डर लगता है इनसे कि वो कब आपको बैन में फंसा देते हैं आगे. इस समय आई थिंक देयर आर 10 stocks in the ban. 2 came out, 3 came out. There were 12 on. Okay, Chambal is out of ban. चलिए, मुबारक हो आपको. So 286 hourly would be a very tight trail. थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो 280 होता है, और अगर ऊपर की तरफ अब निकलता है ना ये, तो देखो यहां से रिजेक्शन आया था हर बार. सो हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई. सो 302 to 310 like that is what I would be looking at. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Again, a lot of chats. I'll just take few more. Shit, today it's going to be very difficult. Bandhan Bank, I've anyway said. I hold. Okay, one second. Okay, Tata Power, sir. I think 2-3 times I've got Tata Power. So Tata Power. See,
what is happening in the market for the last few months is sector shuffling is too fast. It's not कि एक सेक्टर पकड़े वो वही चलेगा बाकी नहीं चलेंगे और निफ्टी मैनेज हो जाएगा स्टॉक्स मैनेज हो जाएंगे नहीं. Too fast a shuffle is happening. एक निकला दूसरा दूसरा निकला तीसरा. तो we saw that in PFC, RECL, they were better performers than Tata Power. So अब Tata Power attempt किया, it did its 1x, and couple of weeks back I had covered Tata Power also, the 255 265 call spread. इसमें जो मूव आया था हमारा ये वाला यहाँ से. So now rejection हुआ है वहां से. Attempt to go up. If it you need a minimum hourly push in this above 270. Okay, उसके बाद ही कुछ वो attempt करेगा upside में all the way. Now next Fibonacci resistance. Okay, there's a Fibonacci level here, 282 300. So again, for viewers, Fibonacci, those who want to learn Fibonacci, please Google Fibonacci trading books. You'll get them in any platform. Learn Fibonacci. Fibonacci is one of the most simple ways to plot your targets. 1x. Fibonacci is found in nature. Fibonacci is found in planetary, in plants, in the pyramids. It's one of the most amazing studies, and Fibonacci बोला जाता है by Leonardo del Pasa, but हमारे वैदिक हिस्ट्री में भी है. It's mentioned in hundreds and thousands of years ago. So it's amazing study है. वो बहुत अच्छा चलता है. So those who want to just start plotting, these are the Fibonacci levels you will see in front of you. Yeah. So इसका support अभी support पर है. Breakdown below 260 थोड़ा सा breakdown आ सकता है till 255. That means ये settlement फिर trouble में आ जाता है उसका. क्या करो? Yeah, sir, I'm seeing a lot of questions today. Okay, view on SPI and sale is one we have covered. I'm just trying to see. Sale is in ban. Yeah, sale is in ban. I think I don't know यार. कल changes हुए हैं ban में. 12 स्टॉक से 10 हुए हैं. 3 बाहर 1 एंट्री हुआ है. Delta Corp has come out of ban. Nalco is sale is out of ban. Nalco and Delta Corp sale are out of ban. Okay, I'll just take Shreyas Day. Please do not spam. I'll never take your question anyway. If you keep spamming, that doesn't help. Okay. The list, sir, Berger Paint 720 call option view. Berger Paint 720 call. Let's go here. Berger Paint 720 call. Here we go. Berger Paint 720 call. काफी गिर गया. ये नहीं चला है. नॉन परफॉर्मर हुआ है ये और एशियन पेंट्स इन पर्टिकुलर. दोनों नहीं चले. यहां से गिरा है. देखिए ब्रेकडाउन, सपोर्ट ब्रेकडाउन. सो टिल इट इज बिलो 7.5 $8 इसमें रिकवरी डिफिकल्ट होगी. यस, उसके ऊपर ही कोई अच्छा रिकवरी आ सकता है इसमें. ऑल द वे टिल probably will try to push its way up to 12 or maybe more after that. So keep that factor in mind. उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा वो नहीं दिख रहा है मुझे फिलहाल. अगर स्पॉट चार्ट भी देखूं तो below 710 715 this settlement will be tough. Below 710, this settlement might push its way down to 695. Okay. Viewers, one more thing. Since we are short on time and there are a lot of questions coming in chat, I'm sorry, I won't be able to take every question, but there's one thing. Dinesh sir just texted me. He has said, in case your view is not covered today, right now in the live session, once the session ends, you can come in the comment section, post your view, post your query. That will be answered by tomorrow, by Sunday, by tomorrow EOD. Give us 2 days. Every question will be answered with proper Ichimoku levels. So in case your question is not covered, please do not get angry or something. You please come back on this video, post your question.
that will be replied, that will be covered by us, and that is, you can take it on as a promise from our end. We will definitely cover each and every question that you put in the Yeah, but comment section. Gaurav, only the Only derivative. stock, yeah, only the derivative ones. Okay, We won't have only on. the derivative ones. Okay. Yeah. Okay, sorry. Ashok Leland 182C is open. That is a call given by a derivative team. So please, Yeah. you guys can hold it with the given target and stop loss. So ignore that. Okay, I won't be taking that. Okay. Okay, what do I take now? Okay, LTIM, sir. This is the fourth time I'm seeing Abhishek posting it, so I'll take LTIM. LTIM. Yeah. I'm again saying, viewers, if I'm not able to take a question in the live chat, please come back on this video, post your query. That will be replied from our end. That is a promise from my side. But only and only FNO stocks, no cash stocks or something like that. Thank you. The LTIM is replicating what the IT index is doing. एकदम थोड़ा सा पीछे है. Follow the leader चल रहा है. उसमें इस समय TCS has come out like a bang, and Infosys. LTIM is also trying to push its way up like that. You need to see LTIM sustain above. I've drawn a horizontal line out here, 5640. तो जितना उसके ऊपर सस्टेन करेगा, ये उतना स्ट्रांग होते जाएगा, एंड देन इट कैन पुश इट्स वे ऑल द वे टू 62. 57 will be a formality for it in that case. 62 तक निकल जाएगा, but let it sustain above this black line. So from a if मेरे को अगर बोलोगे कि will you try to do aggression out here? No. Also, if you look at the simple technical thing, ये देखो, it's trying to make a wedge-like structure. Okay. So you don't want to do anything fresh in this mess out here. तो थोड़ा सा अपसाइड में ब्रेकआउट के बाद एज एन ऑप्शन बायर हमको मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम उसके ऊपर ही आएगा, नहीं तो फिर स्लगिश रहेगा. अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहेगा, प्रीमियम खाता रहेगा थीटा डी के उसमें. क्या करो? Sir, will you take a live session on Ichimoku for an hour? That is a request. वो वीडियो देख लो ना यार, जो हमने जनवरी में किया था. द बेसिक from a basic point of view of Ichimoku, and my courses and all are there. Lots of books are there. You can go through them. My courses are all over. But वो वीडियो देख लो. I think दिसंबर जनवरी में हमने किया था ICICI डायरेक्ट में. It was quite from a beginner's point of view मैंने पूरा समझाया था उसको. And in my YouTube show every day, 5 days a week when I do derivative data at the end of the day, उसमें मैं दिखाता ही हूँ Ichimoku impact. Yep. Yeah. Amit Dwivedi, open call means we have a recommendation given that is still the stop loss or the target is still yet to be triggered. So that's what it means. So ONGC 182 call option was recommended between 3 and 3.8. 182C, that is for a target of I guess 7 or 8. It made a high of 5.5 plus on Friday, but it came down. So that's what I'm trying to say. Next, I'll take Hindalco. Okay, we'll take Hindalco. So can you take Hindalco? Because you're 4 likes away from 100. So let's make 100 likes, please. Radhiji, we cannot cover ICICI. We do not cover any stocks from ICICI group because of our we are a parent. ICICI Bank is our parent, so we do not have any recommendation coverage on any ICICI group companies. Yeah. So Hindalco, very, 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 at a juncture, जिसको हम बोलते हैं मेक और ब्रेक जंक्चर है इस समय. ये गैप डाउन हुआ है वीकली का अप्रैल 2020, वीकली गैप डाउन. इट हैज जस्ट कवर्ड द गैप डाउन. ये गैप डाउन कवर्ड हो गया उसका यहाँ पर. तो ये गैप डाउन को अगर हम निकालेंगे तो आई नीड at least a daily sustenance above 501. 496 है. 501 के ऊपर खुला आसमान है एकदम. मार्स मून सब निकाल देगा ये स्टॉक. उसके ऊपर मार्स मून जो आप बोलोगे निकाल देगा उसके ऊपर. इसको बस थोड़ा सा वी आर
coming very, very close to a monthly settlement, right? So monthly settlements may, towards the end of the settlement, what happens is that when it comes to a wall, we tend to see writers try to block a move. तो ताकि वो fear of missing out, या तो वो लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सेटलमेंट कैलेंडर ट्रेड करते हैं, नेक्स्ट सेटलमेंट का लॉन्ग करते हैं, ये सेटलमेंट को शॉर्ट करते हैं. लुक एट दिस, हुआ है 43 lakhs, okay, in the 500 call. So जब आप, we are now trading at 496, ₹4 ऊपर जो कॉल है जिसका ₹10 प्रीमियम है, वो 43 lakhs का हुआ है खरा है, और एडिशन हुई है. नॉट अ जोक, इसको तोड़ना नॉट अ जोक. और सामने से जो हमारा पुट हुआ है सिर्फ 10 लाख है. पीसीआर इज हॉरिबली बेरिश इसका. तो द स्टॉक इज बुलिश but may not be from an option momentum point of view. Yeah. Okay. Moving on next. One second. Okay, sir. We'll take last two questions, and if it's not covered, please come back in after the video ends. Please post it in the comment section. We will definitely take it, or else you guys can catch hold of us on Thursday. So we are anyways there live on every Thursday and Saturday. So you guys can come and catch hold of us. So I'll take someone has been posting Torrent Pharma and Syngene. So we'll take Torrent. Sir, up to you. Torrent Pharma or Syngene? Torrent. Bullish Sharabi? Can we call this? Yeah, kind of body के अंदर ही है ना, inside. या कोई clarity नहीं है from a option point of view. Clarity नहीं है. Trying to pull back, no clarity yet. It needs a boost above 1900 and careful below 1825. Yeah. Boost above 1900. 1900 के बाद boost is very solid. पूरा boost is the secret of our energy बन जाएगा उसमें. Yeah, good. Okay, last one we'll take. This is the last question. We'll take L&T. Chalo, Shreyas Day. We'll take L&T for Shreyas. He's been. I think in one of the last two Thursdays, se Rajbhai has been massively bullish. Yeah. So gap up hai. Gap up is still holding. Till we are above 2850, ये एक थोड़ा बेरिश कैंडल था, बट फॉलो थ्रू में उतना दम नहीं है बेरिशनेस के इसका अभी तक. या एट अ क्लाउड सपोर्ट. सी एकदम लोअर टाइम फ्रेम में जाऊं तो काइंड ऑफ अ हेड एंड शोल्डर है. सी दिस लाइन चार्ट. या सो यू नीड अ कन्विंसिंग ब्रेकडाउन below this level, then in danger in the lower time frame. Or upside, let the pattern get negated. इसके ऊपर पैटर्न नेगेट, शॉर्ट कवरिंग आएगा, इसके नीचे हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट हो जाता है इसका, बट लोअर टाइम फ्रेम. कीप दैट इन. या गौरव. Yeah, I'll just say there's somebody from Deepak Badade Trading Academy. Please avoid this, sir. This is not the platform for you to I hope you understand what I'm trying to say. So please avoid it, sir. That's all I'll say politely. Okay, sir, it's 12 o'clock. It's end of our session. Viewers, please, if your questions are not being covered, please come back on the comment section. It will be answered. I'll make sure Dinesh sir comes and answers. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Dinesh sir, for being a part of this. Thank you, Gaurav. Thank you, viewers, for taking out time and being with us today. Absolutely. See you guys on Thursday for our expiry session. Thank you. Bye-bye. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.